Okay, so let's start with the next heading. What is our next topic? Our next topic is crop protection. What is our next topic? Crop protection. So crop protection मतलब फसलों की सुरक्षा. अब क्या करेंगे? For protection of crops, farmers use several methods, some of which are as follows. First, scarecrows. What do you mean by scarecrows? These are the images of human forms placed in the field that can keep birds away from field. Okay? ये क्या होते हैं? स्केयरक्रोज क्या करते हैं? स्केयरक्रोज खेतों में किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि पक्षियों से फसलों की सुरक्षा करी जा सके, है ना. ये स्केयरक्रो जो होता है वो क्या होता है? एक इंसान के पुतले की तरह होता है और इसको देखकर पक्षियों को ऐसा लगता है कि कोई इंसान वहाँ खड़ा है, तो वो डर के भाग जाते हैं, है ना. चलो, नाउ द नेक्स्ट इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. What happened here? After replenishing the soil with the adequate nutrients, it is important to protect the crop from damage by pest. Ab here, what is the means of pest? Remember, insect and rodents both are come under the what? Pest. Microbes and fungus. For these purpose, chemical substances known as pesticides are used. Okay, so to kill these pests, the chemical which is used is called as pesticides. What it called as? Pesticides. Okay, and pesticides are poisonous in nature. They kill the pest but do not harm the plants. Pesticides include insecticides, which kills the insect, fungicides, which kills the fungi, and rodenticides, which rodent means rat, mice. These all are the rodents. So these rodenticides are responsible to kill these rodents like rat and mice. Some commonly used pesticides are DDT, BHC, Malathion, Gamexine, Heptachlor, and Methylparathion. Okay, now come to the next one. Next is what? Next is weeding. Weeds. What are weeds? Tell me first. Unwanted plants. So unwanted plants are known as weeds. Weeds are unwanted plants that grow along with crop plants and compete with the crops for water, mineral and sunlight. Why we are saying that these weeds are not good for plants? Because they start competing with the crop plant for water, minerals and sunlight. वो क्या करते हैं? हमने तो क्या लगाया था भाई? मैंने तो भिंडी का पौधा लगाया था, लेकिन भिंडी के साथ में जो खरपतवार या अनवांटेड वीड्स उगाए, वो वीड भी क्या कर रहा है? मैं जो सारे न्यूट्रिएंट्स मेरे पौधे को दे रही हूँ, वो सारे न्यूट्रिएंट को वो भी एब्जॉर्ब करना चाह रहा है, वो भी कंज्यूम करना चाह रहा है, जिस कारण से क्या होगा? आपका पौधा और वो वीड्स, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा. ठीक है. Then amaranthus and wild oat are some examples of weed. This you have to remember, children. What you have to remember? You have to remember the name of weed. The name of weed is amaranthus and wild oat. This two you have to remember. Okay. They need to be removed at regular intervals. Otherwise, crop yield will be badly affected. The process of removing weeds from a field is called weeding. Okay. So weeding is what? Removal of unwanted plants from the crop field. क्या करना है? ये जो अनावश्यक पौधे हैं जो अपने आप ही उगाए हैं, इनको क्रॉप फील्ड से हटाना.
क्या कहलाएगा? वीडिंग. इट कैन बी डन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. What are these methods are? Let's see in the next slide. What? The very first method is mechanical method. Mechanical यानी जहाँ पे हम किसी मशीन हथियार का इस्तेमाल करते हैं. तो ये क्या है? In this method, weeds are removed by hand or by using implements like a खुरपी और a harrow. ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल मेथड में हम वीड्स को या तो हाथों से ही उखाड़ देंगे या तो हम खुरपी का इस्तेमाल करेंगे. दूसरा क्या बोला गया है? केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे? दीज मेथड्स इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स. ओके, 2,4-D and MCPA. These are the examples of weedicides. Okay, now next is biological method. Third method is what? Biological method. In this method, natural enemies of weeds like insects are released in the field which feed on weeds and destroy them. Biological मतलब ही हमें समझ में आता है ना. Biological मतलब क्या? Involvement of living. Bio means living. तो जब हम क्या करेंगे? लिविंग का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या बोला? हमने उन वीड्स के एनिमीज, उन वीड्स को किल करने के लिए या हम क्या करेंगे? उन एनिमल्स को खाने वाले ऐसे इंसेक्ट्स को फील्ड में छोड़ देंगे जो कि क्या करेंगे? उन वीड्स के ऊपर फीड कर लेंगे, है ना, उनको खा लेंगे. तो उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? कॉल्चिनील इंसेक्ट इज यूज्ड टू एलिमिनेट prickly pear. Okay, prickly pear is the example of a weed, okay, which is what? Feed by cochineal insect. Cochineal insect क्या करता है? इसके ऊपर फीड अप कर जाता है जिससे हम अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे.